क्लास 7 सिविक्स। मैं आर एस प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 5 स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ऑफ छत्तीसगढ़ कराने जा रहा हूँ। चलिए देखिए इसमें मेन हेडलाइंस क्या है, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले है ये, अ लॉट ऑफ पैडी इज ग्रोन इन छत्तीसगढ़ स्टेट, सो इट इज कॉल्ड द राइस बाउल ऑफ इंडिया। धान का कटोरा बोला जाता है इसको, भारत का। Earlier, paddy was desiccated with the help of pounding appliances like the mussels and dheki. Later on, many villages installed the paddy pounding machine called dhan kutti. धान कुट्टी कहते हैं उसको। There are many large rice mills in our state at Khurd, Mahasamund, Tilda, Nevra, Navapara, Razim, Arang, and Bhatapara, etc. Farmers come to government Samiti to sell their paddy. These society buy paddy and at the supported price which is fixed by the government. Thus, they get a good price for their paddy. Then cooperative society do not buy all the paddy the farmer have to sell in the grain market. Some of the farmers sell the paddy directly to the rice mill owners, store the paddy in its godowns and send it to the rice mill for dehusking. Stores the paddy in the godowns and send it to the rice mill for dehusking. There are four stages in the process of dehusking in the factory. The rice mill has many elevators. The husk is removed from the rice by machine called separator. The driver and the helper are permanent employees who work at the mill throughout of the year. In big factories, identity cards are essential to enter. A time punching machine is fixed at the gate. Employees who come to work punch their identity card in the machine when they come to the factory and when they leave to record time their arrival and departure. Limestone is used a raw material for cement factory. Large pieces of limestone are picked up by machine called crane. The crusher hopper is a machine which breaks the large limestone rocks into smaller pieces. There is an operator to run the machine and one helper is there to assist him. The grasshopper is a V-shaped machine. The engineers repair the machines. All the machines run automatically. Conveyor belts are broad and strong U-shaped belts that are used to move raw material from one machine to another machine. The limestone pieces are ground into powdered by raw mill. The 64-meter high kiln is the heart of cement factory. In kiln, a furnace is used to heat limestone to a very high temperature. The problem of dust is greatest problem of cement factory. It is harmful to human being. Gypsum and other materials are added to the heated limestone and the mixed is ground into cement. The cement is filled in a huge task to be packed into bags. Around 7,000 bags are picked every day in the cement factory. It takes 10 goods train or 400 to 1500 truck to
trucks to take this cement to the factory. There is a control room in the factory from where all activities are controlled by television and computers. The factory runs in shift of 8 hours. चलिए देखते हैं क्या कुछ हो रहा था। ये है फार्मर्स कैरिंग पैडी टू कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी को ले जा करके अपना धान बेच रहे हैं जा करके और अच्छे पैसे इनको मिल जाते हैं। दूसरी तरफ चलते हैं उस धान वाले मिल पे, यानी कि बॉइलिंग ऑफ बॉइल्ड राइस इन द मिल। मिल के अंदर जो है इस राइस को बॉईल करके बनाया जा रहा है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से पॉल्यूशन भी बहुत सारा आ रहा है। देखो ये क्या है, डर्टी वाटर ड्रेन फ्रॉम द बैक ऑफ पार बॉइल्ड राइस। राइस मिल के पास से जो पानी है बेकार हो जाता है, वो पॉल्यूशन का काम करता है। ये यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है, द होल प्रोसेस ऑफ द मेकिंग सीमेंट। ये सीमेंट का दिखाया हुआ है, वो तो राइस का दिखाया हुआ था। इसमें क्या है, यहाँ पे रॉ मटेरियल फ्रॉम माइन से जो रॉ मटेरियल निकालते हैं वो है यहाँ पे। इसके बाद ये ट्रक से ढुलाई वगैरह हो जा रही है और यहाँ ले जाकर के ऊपर एंड क्रशर को दे देते हैं, जहाँ पीसने और उसको बारीक करने का काम लेते हैं। यहाँ से होता हुआ ये इसमें आ जाता है और इसको कहते हैं सीमेंट मिल। सीमेंट मिल में खूब अच्छी तरह पीस उस करके फिर हीटिंग वाले में चला जाता है। यहाँ से फिल्टर वगैरह होता हुआ किलन में जाता है, जहाँ बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। यहाँ खूब गर्म हो जाता है, अच्छी तरह मिक्सअप हो जाता है, जिप्सम वगैरह से मिल जाता है। तो यहाँ क्या होता है, सीमेंट कोठी होती है, यहाँ पे ये कलेक्ट होता है। कलेक्ट होते फिर इधर पैकिंग वगैरह का काम चालू होता है और पैकिंग होकर के सीधे ट्रकों में लोड हो जाता है और ये गोडाउन में स्टोर हो जाता है। ये पैकिंग सेक्शन दिखाया हुआ है। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस होता है सीमेंट फैक्ट्री का। सीमेंट फैक्ट्री देखने में बाहर से ऐसी दिखती है पूरी की पूरी। सो इट इज द सीमेंट फैक्ट्री। और ये है पॉल्यूशन फ्रॉम फैक्ट्री। जो फैक्ट्रियां लगाई गई हैं उनसे जो है बहुत सारा पॉल्यूशन होता है। सबसे पहले तो ये काला दम घुटने वाला जो स्मोक है, ये एयर पॉल्यूशन कर देता है। और यहां से जो ये वाटर पाइपलाइन दिखाई दे रही, ये वाटर पाइपलाइन, ये वाटर पॉल्यूशन को बढ़ावा देता है। एयर पॉल्यूशन भी रहता है, वाटर पॉल्यूशन भी रहता है और इन कारखानों से यानी इस इंडस्ट्री से साउंड बहुत निकलती है। सो साउंड पॉल्यूशन भी बहुत होता है। साउंड पॉल्यूशन भी बहुत होता है इसमें। तो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाता है। चलते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, देखते हैं ये चीजें हैं कहाँ कहाँ। तो ये देखो, ये आपको पहले साइंस समझा दे रहे हैं क्या। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये सुपर थर्मल पावर के लिए दिखा हुआ है, ये स्टील प्लांट के लिए दिखाया हुआ है और ये एल्युमिनियम प्लांट है और ये सीमेंट प्लांट है और ये स्पंज आयरन प्लांट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, ऊपर से लेते हैं छत्तीसगढ़ को। देखो यहाँ कोरिया दिखाई दे रहा है, यहाँ सूरजपुर है, ये बलरामपुर है आपका। शुरू में तीनों ये दिख गए हैं आपको। गोरिल्ला ये है, पेंड्रा है ये, और मारवाही है, और ये सरगुजा है, जसपुर है, और ये कोरबा दिखाई दे रहा। तो कोरबा में देखो आपको थर्मल प्लांट दिखाई दे रहा है और क्या दिखाई दे रहा है, ये एल्युमिनियम प्लांट ये दिखाई दे रहा है। दोनों प्लांट हैं कोरबा में। इसके बाद ये मुंगेली दिखाई दे रही है आपको। मुंगेली से लगा हुआ बिलासपुर है। तो बिलासपुर में दो चीजें दिखाई दे रही हैं, एक तो आपको सुपर थर्मल प्लांट दिखाई दे रहा है ये, और दूसरा क्या दिखाई दे रहा है, स्पंज आयरन प्लांट। ये है स्पंज आयरन प्लांट। और लास्ट में नीचे भी जरा ध्यान से देखिए, ये सीमेंट प्लांट भी है आपका। तो तीनों चीजें हैं बिलासपुर के अंदर, मतलब बिलासपुर बहुत ज्यादा धनधान्य है। इसके बाद चलिए जांजगीर चांपा की तरफ। जांजगीर चांपा में एक ही चीज दिखाई दे रही है आपको, ये इधर ये क्या चीज है आपकी, ये है सीमेंट प्लांट, और दूसरा ये दिखाई दे रहा है स्पंज आयरन प्लांट भी है। दोनों चीज है। इसके बाद बढ़िया इधर रायगढ़ में। रायगढ़ में देखिए क्या है, सीमेंट प्लांट भी है और ये स्पंज आयरन प्लांट भी है। तो ये सारी चीजें हैं आपका। इधर कबीर धाम है, इसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बेमेतरा, इसमें भी कोई चीज नहीं दिखाई दे रही। बलौदा बाजार ये दिखाई दे रहा है आपका। बलौदा बाजार में भी देख लेते हैं नीचे की तरफ क्या है। तो हर एक की सीमाएं इसमें दिखा दी गई हैं। और इधर जरा ऊपर की तरफ देखिए तो लगा हुआ जो ऊपर की साइड में है ये उत्तर प्रदेश है। बगल में आपको ये झारखंड दिखाई दे रहा है और ये मध्य प्रदेश लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है।
नक्शे में ध्यान रखना हमेशा बच्चों को, नॉर्थ ऊपर की साइड में होता है, साउथ नीचे की साइड में होता है, राइट हैंड साइड में ईस्ट और लेफ्ट साइड में वेस्ट होता है। ये डायरेक्शन को हमेशा शो करके रखते हैं और इसी से हम डायरेक्शन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं जरा। ये आपका नेक्स्ट आ गया है। तो यहाँ बलौदा बाजार में बताया गया आपको, ये सीमेंट फैक्ट्री दिखाई दे रही है, सीमेंट प्लांट है यहाँ पे। और रायपुर की भी बात कर लीजिए, तो रायपुर में तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये है सीमेंट प्लांट है आपका, यहाँ पर भी सीमेंट प्लांट ही दिखाई दे रहा है। चलिए दुर्ग की बात कर लीजिए, तो दुर्ग में क्या है, यहाँ पर भी सीमेंट प्लांट ही दिख रहा है, स्टील प्लांट है बच्चों यहाँ, तो ये स्टील प्लांट है। और बलौदा में देखिए क्या है, यहाँ स्टील प्लांट दिखाई दे रहा है। राजनाथ गांव में कोई भी चीज नहीं इस तरह की है। महासमुंद भी फ्री है इन सब चीजों से। इसके बाद धमतरी की बात कर लो, यहाँ भी कुछ नहीं है। गरियाबंद में भी कुछ नहीं है। कांकेर में भी कोई चीज नहीं है। बगल में ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये उड़ीसा है। और इस तरीके से आपको 3 हिस्सों में मैंने इस मैप के दिखाए हैं। तीनों हिस्से में एक एक चीज समझ में आती है। वैसे तो सारा छिपा हुआ दिखता है, छोटे में नहीं दिखता। चलिए आगे चलते हैं। ये बगल में यहाँ महाराष्ट्र दिखाई दे रहा है आपको, और यहाँ साइड में तेलंगाना है। अब यहाँ जरा बात करते हैं नारायणपुर की। तो नारायणपुर में क्या चीज दिखाई दे रहा है आपको, ये सीमेंट प्लांट यहाँ दिखाई दे रहा है। और कोंडागांव है, कोंडागांव में भी कुछ नहीं दिख रहा। बस्तर की बात कर लीजिए, बस्तर भी फ्री है इन सब चीजों से। दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा में भी कुछ नहीं है। सुकमा है, सुकमा में भी ऐसी कोई चीज नहीं दिखाई दे रही है। और ये बीजापुर है, बीजापुर में भी कोई चीज नहीं। इस तरह हम लोग सभी डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर ले रहे हैं, इसमें जितने भी हैं इनका क्षेत्र है हमारा। तो चलते हैं अब आगे की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का पूरा मैप हो चुका है इसमें। अब बात करते हैं यहाँ पर अपने एक्सरसाइज की। तो फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है आपको, इज नीडेड टू एंटर अ फैक्ट्री। फैक्ट्री के अंदर घुसने के लिए क्या चाहिए, एंट्री पास चाहिए। तो यू कैन राइट हियर, या एंट्री कार्ड चाहिए, दोनों में से कुछ भी कह सकते हो आप। तो एंट्री पास है ये। Big stones are poured in other machine with the help of। तो ये है क्रशर हुपर है, ये क्रशर हुपर। इसके बाद यहां देखिए, बिग एंड स्मॉल स्टोन्स आर पाउडर्ड इन अ प्रोसेस। कहां पाउडर बनाता है, जैम में। यहाँ पे जैम लिखेंगे, जैम क्रशर है ये। चलिए नंबर 3 की बात करें। वेयर द पाउडर ऑफ द स्टोन आर बेक्ड इट इज कॉल्ड। कहाँ होता है ये, किलन के अंदर होता है, जहां टेम्परेचर बहुत हाई होता है, ये किलन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। ये हमारे पास करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट, जो फॉल्स है उसको करेक्ट करना है। तो चलते हैं पहले वाले में। द फैक्ट्री वर्कर्स डू नॉट वर्क मोर देन 4 to 5 आवर इन ऑल फैक्ट्री। सो आंसर ये फॉल्स है हमारे पास। तो आंसर के फर्स्ट में देखिए क्या है, द फैक्ट्री वर्कर्स डू नॉट वर्क मोर देन 8 hours इन ऑल फैक्ट्रीज। 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं लेते हैं, लेकिन बच्चों 12 घंटे काम करवाते हैं ये लोग। कॉपी बुकों में भले ही 8 घंटे आपको दिखाया जा रहा है, लेकिन रियल में ये 12 घंटे तक होता है। चलिए सेकंड देखिए, द रॉ मटेरियल्स फॉर सीमेंट फैक्ट्री कम फ्रॉम अदर फैक्ट्री। तो इसका आंसर है ये, द रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट फैक्ट्री कम फ्रॉम अदर फैक्ट्री। तो ध्यान रखना बच्चों। थर्ड की बात कर दो, पॉल्यूशन इज मिनिमाइज्ड इन सीमेंट फैक्ट्रीज नाउ। सो थर्ड क्या है, पॉल्यूशन इज मिनिमाइज्ड इन सीमेंट फैक्ट्रीज नाउ। इसका मतलब ये सही है आपका। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पहले की बात कर लें। बाय द हेल्प ऑफ टीचर्स लिस्ट आउट द अदर सीमेंट फैक्ट्रीज शोन इन द मैप ऑफ छत्तीसगढ़। तो आंसर है यहाँ पे, फॉलोइंग सीमेंट फैक्ट्रीज आर देयर इन छत्तीसगढ़। कहाँ कहाँ है ये, नंबर 1 जांजगीर गोपाल नगर में, नंबर 2 रायगढ़, नंबर 3 सरगुजा अंबिकापुर में, नंबर 4 रायपुर
उर्ला, बिरगांव और मांडर, रावण। और 5वें नंबर पे दुर्ग है, जमुल। और नंबर 6 पे बस्तर है, जगदलपुर में। राइट इन योर ओन वर्ड्स द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सीमेंट। सीमेंट बनाने का बताना है कि हाँ सीमेंट बनती कैसे है। तो ये आंसर है बच्चों, थोड़ा सा लेंदी आंसर होगा क्योंकि प्रोसेस पूछा गया है। So to make cement, first of all, the limestones brought from nearby mines. The crane lift large chunks of limestone and put them in the crusher hopper, which breaks the large limestone rocks into smaller pieces. Jaw crusher break the limestone in the very small pieces. Then, with the help of conveyor belt, the raw material reach in the raw mills where limestone pieces are grind into a powder. A large fan husk out the powder from the drum and store it in huge tanks. The limestone stored in the tanks is slowly fed to a kiln where the coal is burned in the furnace to generate a fire to heat the limestone to a very high temperature. Once the limestone is heated to the required temperature, it is sent to the cement mill on another conveyor belt where gypsum and other materials are added to the heated limestone and the mixed is grind into cement. The cement is filled a huge tank to be packed into bags. Next, what are differences between products made by artisans and at home and products produced in factories? So answer है following are the differences between production at home by artisans and production in factories. तो यहाँ पॉइंट्स ले रहे हैं और प्रोडक्शन एट होम ले रहे हैं और यहाँ प्रोडक्शन इन फैक्ट्रीज ले रहे हैं। चलिए देखिए, पहले सबसे पहले बात आती है रॉ मटेरियल की। तो इट रिक्वायर्ड लेस क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल, और यहाँ क्या है, इट रिक्वायर्ड लार्ज क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि ज्यादा चीजें बन जाती हैं। सेकंड की बात करिए, कैपिटल, लेस कैपिटल नीडेड टू डू प्रोडक्शन, और यहाँ क्या है, नीडेड टू डू प्रोडक्शन a large capital is required. थर्ड है मार्केट की बात कर लो, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट गेट ओवर इन द लोकल मार्केट, द प्रोडक्ट नॉट ओनली सेल इन द लोकल मार्केट बट आल्सो कवर द इंटरनेशनल मार्केट। नंबर 4 लेबर की भी बात कर लीजिए, तो आर्टिजन्स डू प्रॉपर production with the help of family members, or factory required a large number of skilled labor. Number 5 की बात करिए, टाइम, there is no time lag, यहाँ क्या है, there is the time lag for the production. Number 6 मैनेजमेंट, तो एट होम वाले में क्या है, इट डज नॉट रिक्वायर्स लार्ज स्केल ऑफ मैनेजमेंट बट इन फैक्ट्रीज इट रिक्वायर्स अ लार्ज स्केल ऑफ मैनेजमेंट। नंबर 7 मशीन की बात कर दीजिए, तो होम पर इट नॉट रिक्वायर बिग साइज ऑफ मशीन, और यहाँ क्या है, इट रिक्वायर्स बिग साइज ऑफ मशीन फॉर प्रोडक्शन, यानी काम करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों की जरूरत पड़ती है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, 8 है ट्रेनिंग। तो होम वाले में क्या है, ट्रेनिंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन, लेकिन फैक्ट्री में इट रिक्वायर्ड ट्रेनिंग टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। चलिए ट्रांसपोर्ट की भी बात कर लेते हैं, तो होम में ट्रांसपोर्ट इज नॉट बीइंग टेंशन बिकॉज मार्केट इज नियर बाय देयर एरिया, लेकिन यहाँ क्या, इट रिक्वायर्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज इन द ग्रेट एक्सटेंट। नंबर 10 पे रिस्क की बात करिए, देयर इज अ लेस रिस्क, और यहाँ क्या है, इट है ग्रेट रिस्क, फैक्ट्री में बहुत ज्यादा रिस्क रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, बढ़ते हैं जरा, क्या है,
Workers are distributed in large factories. Did you see this in the case of the cement factory? So answer is yes. In big factories, work is done by dividing it into various parts. This is seen in cement factory also. The factory is divided into various parts for different type of workers. For different departments, various workers are appointed. Next question है, if a mill owner wants to run his mill for the whole year, what will he have to do? If a mill owner wants to run his mill for 24 hours, it is very essential that there should be sufficient amount of paddy available. Mill owners should have full contact with the FCI and Krishi Mandi so that there should not be shortage of paddy. Moreover, our contact with the retail seller and the direct farmers is also essential because to run the mill for 24 hours, 1,200 sacks of rice is required. Apart from this, proper arrangement of labor and proper management is also needed for the mill to run 24 hours. Next, explain the process of extracting rice from husk in your own words. तो आंसर है यहाँ पे बच्चे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है जो ध्यान से देखेंगे. To dehusking the paddy at home, first paddy are dried in the sun. Then the ladies removes pebbles, dust, stone from paddy. Paddy was dehusking with the help of fondling appliance like the musal and dheki. But now the dhankuti is used in many of villages. In the mill, two people required, one who keep the paddy on the mouth of the elevator, then the rice extract from paddy in the mill. The two from form of rice we get, one is khanda and the second is kanki, which is separated by winnowing basket at home. If the rice from paddy at home, it is not polished. लेकिन जो मिल में होता है वहां तो पॉलिश जरूर करते हैं लोग. To take out rice from paddy, there are 4 stages in the process. सबसे पहले बात करिए क्लीनिंग. क्लीनिंग में क्या होता है? When the sack of paddy reach to the mill from the grain market of the FCI godowns, 10 to 12 laborers empty the sacks near the machine. Two laborers feed the paddy into the mouth of the elevator. The paddy goes from one lever to the machine to another by elevators. The rice mill has many elevators. When the machine starts, an elevator takes the paddy to the strainer. Strainer है here gravels and dust is separated from the paddy. The second elevator then takes the paddy to another strainer. This strainer removes more dust and sand and teeny stones. Once the paddy is cleaned of all the dust, sand, and waste, it is sent through pipe to a third elevator, which takes the paddy to the dehusking section of the mill. Number 2 पे आता है dehusking the paddy. In this part of the machine of the paddy passes between two rubber wheels and husk is removed by friction. Friction and elevator then takes the rice and husk to the winnowing section of the mill. Number 3 पे है separating the husk. In this the husk is removed from the rice by machine called separator. The husk goes out from a pipe while the rice reaches the polished section of the mill.
Now polish the rice. During polishing, the rice is separated into their layer. The upper layer is of white grain rice. The middle layer contains rice grains broken into pieces, and the lower layer has tiny bites of rice. Bits of rice. The rice is in the upper layer is collected and filled in sacks. Next question है, what do you mean supported price? So answer is here. The government decided the quantity of food grains it will buy every year and fix a minimum price for the purchasing them. This fixed price is known as the government support price. Next question है, where do farmers prefer to sell their paddy and why? So answer है farmers prefer to sell their paddy in cooperative societies. These society buy paddy at the support price, so they get a good price for their paddy. Next question है you have discussed the following words with your teacher. सबसे पहले है क्रश हुपर, फिर जॉ क्रशर है, ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, रॉ मिल्स हैं, कन्वेयर बेल्ट है, ऑपरेटर है, किलन और पॉल्यूशन मैनेजमेंट यूनियन. मेक सेंटेंस विद दीज वर्ड्स है. चलिए आंसर है पहले चल रहा क्रश. ये क्रशर हुपर है. द क्रशर हुपर इज अ वी शेप्ड मशीन. वन of its side is stationary while the other side moves forward and backward. This moving wall crushes the stone against the stationary side, breaking them into smaller pieces. Jaw crusher hooper, one of its side is stationary while the other side moves forward and backward. This moving wall crushed the stones against the stationary side, breaking them into smaller pieces is called jaw crusher. Automatic machine who washes itself. Raw mills, the conveyor belt takes the crushed limestone to the raw mill. This is a long, thick wall drum filled with large iron balls. The limestone is put in the drum, which is then rotated at a high speed. The stone pieces are ground into a powder. A large pan sucks out the powder from the drum and store it in huge tank. Conveyor belt are broad, strong U-shaped belt that are used to move raw material from one machine to another machine or from one place in the factory to another. Operator, one who operate machine is called operator. किलन की बात कर लो, ये तो बहुत मेन पार्ट है बच्चों सीमेंट फैक्ट्री का. The limestone powder is stored in the tank. It slowly fed to the kiln. The 64-meter high kiln is the heart of the cement factory. The powder is fed in from one end while there is a furnace at the lower end. Coal is burned at the furnace to generate a fire to heat the limestone to a very high temperature. It takes several days to heat the kiln, so it is never allowed to cool down. If it cools, production of cement comes to a standstill. That is why all cement factories have at least two kilns, so that if one breaks down or shut down, the other can be used. Pollution. If any factory is harmful due to presence of harmful elements is called pollution, such as dust in the air, presence of poisonous gas in the air cause air pollution.
Management for the development of any organization is proper planning is done by the team is called management. The union negotiates with the management to protect the interests of worker. When the need arises, it also fight for right of the workers. Sentences crusher breaks the large rocks into smaller pieces. Second है jaw crusher works in the same way और jaws move इसके अंदर jaw move करता है. Third, nowadays automatically washes are largely in the market. Fourth number है the dust produced in the raw mill when the lime stones are grind into a powder. Number fifth है conveyor belts moves raw material from one machine to another machine. Six, where is the operation of this boat? Number seven, kiln is used in the iron and steel industry. Number 8 है development depends on proper management. Number 9 है the workers in all factories usually form a union. Next question की बात करते हैं what advantage does a factory have if the worker is done in shift? So answer are the factory workers continuously in 3-8 hours shift. Large factory work continuously to earn more profit and recover the cost of installing expensive machineries. The higher the production, the more the profit earners. Next question है which of the following are true or false? Correct the statement and write the correct ones. Number 1 की बात करूं फैक्ट्री वर्कर्स डू नॉट वर्क फॉर मोर देन 4 आवर्स तो इसका आंसर क्या है फॉल्स है फैक्ट्री वर्कर्स डू नॉट वर्क मोर देन 8 आवर्स अ डे बी की बात कर लो लाइम स्टोन गोज टू द क्रशर हुपर फ्रॉम द रॉ मिल्स तो यहाँ क्या है फॉल्स है ये लाइम स्टोन इज स्टोर्ड इन अ बिग टैंक आफ्टर द रॉ मिल्स सी की बात कर लीजिए द रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट फैक्ट्रीज कम्स फ्रॉम द अदर फैक्ट्रीज ये आपका ट्रू है और लास्ट में आ जाइए द पोल्यूशन प्रॉब्लम्स हैज नाउ बीन रिड्यूस्ड इन सीमेंट फैक्ट्रीज ये भी आपका ट्रू है चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं द सैक ऑफ सीमेंट शोन इन illustration 9.3 has W3M Feb 2005 written on it. See what is written on any other sack. Discuss its meaning and why is it written. इसको तो जो है आप लोग भाई छोड़ ही दें क्वेश्चन तो ज्यादा बड़ी हैं ये तो सॉल्व पर जाकर के आपको पता करना पड़ता है अपने आंसर का लेकिन इसकी जरूरत नहीं है छोड़ दीजिए इसको तो It's not important question. How crusher hoopers work? Answer the crusher hooper is a V-shaped machine. One of its side is a stationary while the other side moves forward and backward. This moving wall crush the stones against the stationary side, breaking them into smaller pieces. Why there is too much dust and temperature in the industry? So answer है ये in the industry low coal is burned in the furnace to generate a fire to heat limestone and when the powder made by limestone the dust powder produced so that there are too much dust and temperature in the industry. Next question है what are the harmful effects the dust from the industry? So answer is here the dust from the factory
contains lime powder and cement the soil of the nearby village, pollute people fall ill, plants and trees are also greatly affected by the dust. Next question है how many types of people work in the industry? So answer is here three types of people work in the industry. First है ये managers and engineers. They control the different units of the factory, look after the maintenance of machine and oversee purchase and sales. Their aims is to ensure that there is no stoppage in production and sales. Number second है permanent workers who work as machine operators and helpers. Number third है contract laborers who carry out the maintenance work. Next question है what is the difference between the regular workers and the contract workers? So answer है according to the law, permanent employees get several facilities and benefits. They include provident fund, leave, pensions, medical aid, and so on. Contract laborers do not get these benefits. These days, all large factories try to avoid employing too many permanent workers and get their work done by contractors. These laborers are the contractors' employee, not the factories, so they do not get the facilities under the factory law. Next question है make a list pollution caused by factory and write their effects. So answer है pollution caused by factories and their effects are as follows. Number first, the poisonous gas released from the industry cause air pollution. Second है using the fossil fuels in the industry increase the temperature day by day. Third है the ozone layer becomes thin because of air pollution. Number four, large number of trees are cutting to establish the industry. Number five, sound of machine creates sound pollution. Number six, the dirty water comes out from the factors cause several types of disease. Next question की बात करते हैं what steps should be taken to control फैक्ट्री पॉल्यूशन. सो आंसर है फर्स्ट में देखिए द लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स शुड बी ग्रो. नंबर सेकंड है द लॉन्ग चिमनी शुड बी प्लेस्ड इन द फैक्ट्री. नंबर थर्ड साउंड कंट्रोलिंग मशीन शुड बी प्लेस्ड टू कंट्रोल साउंड पॉल्यूशन. नंबर फोर्थ है द वेस्ट मटेरियल शुड रिसाइकल. नंबर फिफ्थ है बाय बैनिंग टू ड्रेन द वेस्ट मटेरियल. ये लेसन बच्चों यही समाप्त हो रहा है. नीचे आपको लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें. कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करना है जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके. और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके. मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स. इसी के साथ मैं आर.एस. प्रसाद आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ. मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.